For math videos, please subscribe and hit the bell icon right now. The volume of cube and cuboid. Please read the first question. A matchbox measures 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm. What will be the volume of packet containing 12 such boxes? Okay, so in the question it is being given that the length is 4, breadth is 2.5 and the height is 1.5 centimeter. So here we are supposed to find the volume. If we find the volume of a cuboid, we have the formula L into B into H. So this will be 4 into 2.5 into 1.5 centimeter. So the total volume will be 15 centimeter cube. In the question, it is being asked 12 such matchboxes. 12 multiplied by 15 centimeter cube, which will be equal to 180 centimeter cube. So this will be your final answer. Please write it down. Okay. The second question. The cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? 1 meter cube is equal to 1000 liters. Okay. So length is given, the breadth is given, and the height is given. Okay. This is a water tank in which how much liters of water can it hold? So in the bracket, it is given that 1 meter cube is equal to 1000 liters. This is very simple to understand. So we find the volume. Volume is equal to LBH. So when you multiply 6, 5, and 4.5, the answer that we get for volume will be 135 meter cube. 135 meter cube can hold how much liters? 1 meter cube is equal to 1000 liters. So 135 meter cube will be how much? 135,000 liters. This will be your answer. Please write it down quick. Okay. The third question. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? It must be holding 380 cubic meters of liquid. So volume is given, volume is 380 meter cube. You have to find the height. To find the formula for height, height is equal to volume upon length into breadth. So which is equal to 380 upon 10 multiplied by 8. When you solve this, you get the answer 4.75. 0 cut. When you divide 38 by 8, you get 4.75 meters. This will be the height. This will be the height. Please write it down quick. Find the cost of find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube. Okay. In the fourth question, it says that there is a cuboidal pit. If it is a cuboidal pit, means we have L, B, H. So length is equal to 8 meters,
breadth is equal to 6 meters and height is equal to 3 meters. We have to find the cost of digging. Cost is 1 meter cube is equal to 30 rupees. We find the volume. Volume is equal to LBH, which is equal to 8 6 are 48. 48 into 3, which comes up to 144. 144 meter cube. If 1 meter cube is equal to 30 rupees, 144 meter cube is equal to how much? We have to multiply 144 into 30, which is equal to rupees 4320. Please write it down. Let us come down to the fifth question. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank. If its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. In the textbook, just write it down. This is a question of capacity. So capacity is equal to, fill कितना कर सकता है, तो 50,000 liters. 50,000 liters. तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर ये 50,000 लीटर्स भर सकता है तो इसका वॉल्यूम होगा 50 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो 50,000 लीटर्स मतलब कितना मीटर क्यूब? तो 50 मीटर्स क्यूब. So 50 meters cube will be the volume. Okay. ये याद रखना, 50 meters cube is volume. This is result number 1. In this question, it is also given that we have to find the breadth of the tank. So L BH. ये नहीं पता, लेंथ पता है. लेंथ है 2.5 और डेप्थ हाइट जिसको बोलते हैं वो है 10. ब्रेथ हमें ढूंढना है. सो ब्रेथ इज इक्वल टू वॉल्यूम. Volume upon length into height, which is equal to 50 upon 10 into 2.5. So breadth will be equal to how much? See, 0 0 cut, 2.5 ones are 2.5 twos are 2 meters. So the breadth will be 2 meters. This will be your answer. Please write it down. Let us come down to the sixth question. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. If it has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter, for how many days will the water of this tank last? See, it is being said that the village having a population of 4,000. So we should know that this is a 4,000 people wala village. These are the number of people. It is said that requires 150 liters water per head per day. 150 liters, one person. For ये एक पर्सन के लिए चाहिए इतना लीटर पर डे. ओके, पर डे इतना लीटर जिन लोगों को चाहिए. नाउ इट इज आस्क्ड दैट इट इज अ टैंक. एक क्यूबॉइडल टैंक है इन लोगों के पास विलेज में, बहुत बड़ा था. ठीक है, इसका लेंथ दिया गया है. लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर and height is equal to 6 meters. Let us first find the volume. Volume will be how much? LBH. 20 multiplied by 15 multiplied by 6, that will be 1800. 1800 मीटर क्यूब. तो इसके अंदर पानी कितना रहेगा? If 1800 meter cube is the volume, then the capacity will be 1800 000. इतना लीटर्स पानी रहेगा, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर क्यूब में 1000 रहता है. तो 1800 मीटर क्यूब में 1800, उसके बाद 3 जीरो लगाने के बाद इतने लीटर्स रहेगा.
Now water required per head per day. देखो 4,000 people, उसमें रोज सबको 150 लीटर चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हर रोज का पूरे विलेज में पानी कितना चाहिए, तो 4 15 फिर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इतना लीटर्स रोज का पानी चाहिए, क्योंकि 4 into 15 is 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, so 6 lakh liters will be the requirement for one day. In the question it is asked that if this tank is full, it is full tank, तो ये कितने दिन पानी सप्लाई कर पाएगा? तो you can easily divide this value by this. Three zeros cut, two zeros cut, 6 ones are 6 3s are. So this will be 3 days. 3 दिन तक इनको पूरा टैंक पूरे विलेज को 150 लीटर पर हेड पानी दे पाएगा. I want everyone to write it down. Please be fast. ये सारे कैपेसिटी वाले सम्स हैं लीटर्स वाले, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1000 liters. Very easy to understand. Now let us come down to the seventh question. Question number 7. I want someone to A, read it. a godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden carrots, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter into 0.5 meter, that can be stored in the godown. See, they are asking that there is a big go down. Okay, go down is in the form of a cuboid. ठीक है, इनकी this it has got length, breadth and height. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी गई है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, कैरेट्स, वुडन क्रेट्स रखने हैं, छोटे छोटे ऐसे क्रेट्स रखने हैं, उसमें फ्रूट भी स्टोर हो सकते हैं, कुछ भी स्टोर हो सकता है, तो ये छोटे छोटे क्रेट्स पूरे गोडाउन में रखने हैं. सो दिस विल बी हैविंग एल बी एंड एच, जो क्वेश्चन में दिया गया है. गोडाउन का दिया गया 40 इंटू 25 इंटू 15 एंड क्रेट्स का दिया गया 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. नाउ डोंट सिट एंड कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी. सी जस्ट सी टू इट दैट इसका भी मीटर्स में है और इसका भी मीटर्स में, नो नीड टू चेंज द यूनिट. सिंपल यू हैव टू डू, लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स. ओके, तो ये क्या होगा? हाउ टू सॉल्व दिस? जस्ट पे अटेंशन. इसकी जगह हम ये लिख पाएंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन की जगह पे हम लिख पाएंगे 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. डोंट सिट एंड कैलकुलेट, अगर वो करने बैठोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू रिमूव point from here, multiply 10. If you remove point from here, then multiply 100. Point from here you remove, then multiply 10. 15 15 cut, 25 ones are 25 fives are. Okay, 5 ones are 5 eights are, 5 ones are 5 twos are. 2 into 8 is 16, 16 into 10, 160, 160 into 100, 16,000. So 16,000 will be your answer. Don't sit to calculate, it will be very long and time consuming, so better do it fast. I want everyone to write it down. Please write it down.
Okay, let us come down to the eighth question. Please read the eighth question. A solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of each equal volume. What will be the size of a new cube? Also find the ratio between their surface areas. Eighth question, I said. Okay. Khushi, can you read again? The solid cube of size 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal value. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. Okay. It is being said that the volume of a solid cube of a size 12 centimeter is cut into 8 cubes. So there is a big volume, or there is a big cube. Okay. It has got side L is equal to 12 centimeters. So volume will be L cube, which is equal to 12 ka cube, which will be equal to 1728 centimeter cube. अब 1728 सेंटीमीटर क्यूब तो हो गया. इसमें से इन लोगों को 8 क्यूब बनाने हैं. 1/8, क्योंकि 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1728 को डिवाइड करना पड़ेगा. When you divide it, at that time what do you get? 216. So 216 centimeter will be the volume of a each small cube. जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे ना, इसमें से 8 क्यूब बनाने हैं. ओके, सो छोटे छोटे क्यूब का एक का वॉल्यूम होगा इतना. तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. So in the question it is asked that what will be the side of the new cube. So the side will be 6 centimeter and ratio. तो रेशियो बड़े क्यूब का 12 और छोटे क्यूब का 6. रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे? टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढते हैं? 6L स्क्वायर. ठीक है, तो ये रेशियो कैसे ढूंढेंगे बड़े का? 6L स्क्वायर अपॉन 6L स्क्वायर. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर होगा 144 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर होगा 36. 6 का 36, 1 जा 36, 4 जा. So 4:1 का रेशियो आएगा. This will be your answer. This can be done in a more easier way also, which I got right now in my mind how to solve. See, now it has been said that there is a big cube. Okay, there is a big cube which has got the volume 12 into 12 into 12. ठीक है, डिवाइड बाय 8 तो करना ही है क्योंकि 8 क्यूब्स छोटे छोटे बनाने हैं. सो व्हाट वी डू, 2 6 जार, 2 4 जार, 2 6 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 2 6 जार. So 6 into 6 into 6 makes a new cube. So L will be 6. Very simple. ये MCQ में पूछा जाए ना तब ऐसे करना, बिग मेथड हो तब ऐसे करना. Let us come down to the next and the last question. Please read. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? Okay. There is a river which is flowing and the water is flowing from the river towards the sea and the time is given 1 minute. Okay. The question is very clear to understand that there is a river which is flowing with 3 meters deep. Height उसकी दी गई है. Okay. So height is given is 2 meters deep. So H will be 2 meters. Breadth दिया गया है 40 meters. एंड उसका जो लेंथ है 2 किलोमीटर्स पर आवर. 2 किलोमीटर्स पर आवर. 2 किलोमीटर्स मतलब कितना हो गया?
1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर हो गया इसका लेंथ। दिस विल बी द लेंथ। लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। नाउ लेट अस फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम एल बी एच फॉर 1 आवर, क्योंकि ये जो है वो 1 आवर के हिसाब से ना, लेंथ 2 किलोमीटर 1 आवर के हिसाब से, 1 घंटे की स्पीड में। ओके, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल बी एच 2000 इंटू 2 इंटू 40, which will be equal to 2 4s are 8 8. I think this is 3. Height is 3 meters. So 3 into 40, 120. 120 into 2, 240. So this will be equal to 24000 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा 1 आवर में जब ये पास करेगा, मतलब 60 मिनट्स। अब इसको 1 मिनट का फाइंड करना है। ये हो गया 60 मिनट्स का, ठीक है। तो 1 मिनट का कितना, 2400000 divided by 60. So when you divide this value by this value, you get 4000 meter cube. So the answer will be 4000 meter cube. So by this we end our 13.5. Please write it down. By this we end our video and 13.5. Thank you so much.